Okay, we are going to start. Just wanted to make sure that you are able to see the screen. We confirm kar dein? Yes, sir, it's visible. So the shared screen PowerPoint is visible to everyone. Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So we will, start off from where we had left. With a very, very quick review of what we talked about last time. Okay, so last time we talked about, these five, big internet design or network design challenges. And all of these, if we master these, we would largely understand the computer networking structure. And internet is an example of the largest network that we have available. So one of those is the connectivity structure. If we understand how the connectivity structure works, so if I want to send some data from my machine to a far off machine, I do not need to know. My machine does not need to know the entire path all the way from the source, which is my machine, to the destination, which is maybe somewhere in Europe or Japan or US. So I do not need to know what path the data will take when it travels from my machine to that destination machine. Okay. However, as network designers, we need to understand what the connectivity structure is. End devices are connected to switches. Switches are connected to other switches through links, and those other switches are connected to yet other switches. And bigger switches until you reach what we call the internet backbone. And then everyone is connected to the internet backbone, and that is why everyone on the internet is able to communicate with everyone else. So the hierarchical structure is something which makes the internet, which allows the internet to be scalable. So this hierarchical structure where PTCL as an internet service provider does not need to know what is happening inside LUMS network. LUMS is only a customer of them. Similarly, if you get services from PTCL and you have a house and you have a Wi-Fi inside, many computers inside your house, PTCL or your internet service provider does not need to know how the network is configured within your premises, within your house. उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? And similarly, your internet service provider, how it internally works, as a customer, you don't need to understand that. You don't need to know that. Somehow it will, the job of the internet service provider would be to make sure that whatever data you send through them to any destination in the world, they do their job and they transport that data from their network, taken from you, to the right destination. शायद वो डायरेक्ट राइट डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे. Maybe they will need to get help from another service provider. So your ISP might be only limited to your region. So it would be their job to get connectivity from other bigger service provider which will provide international type of connectivity. And this way, the smaller service provider, they will become customers of the bigger service providers. So as an example of that, LUMS is a service provider for everyone who resides within LUMS. But LUMS is a customer for a bigger service provider, or 2 or 3 or 4 or 5 bigger service providers, from where LUMS gets the internet connectivity service. And those bigger service providers are customers of even bigger service providers such as Singapore Telecom, PCCW, AT&T, Sprint, Verizon, etc. Okay, so this connectivity structure is hierarchical. We understand, a little bit about the connectivity structure. We will know a lot more about the connectivity structure when we talk about routing protocols and how the internet service providers, they are connected to each other. The second interesting challenge or big challenge in internet design is addressing. Everyone has to have an address. हर एक के पास एक address होना चाहिए. Otherwise, you will not be able to send data to them. So anyone who wants to receive something
must have an address, okay? And since everyone who wants to send something would like to receive something as well, so इसका मतलब है कि सबके पास ही एक address होना चाहिए, and that address on the internet we call this an IP address, So the connectivity structure is hierarchical, and the addressing tells us that everyone will have a unique address on the internet, and it is called an IP address, Now, the third big challenge is the data forwarding. The connectivity structure tells us that the end devices, or your laptop or your cell phone or your desktop, they are connected to switches, and switches are connected to other switches through links which are connected to yet other switches. So data is forwarded all the way from source to the destination, When the data goes from the source to the destination, it has to travel through many links connected through these switches. So आपने कुछ data भेजा to a destination machine which is in Europe, so maybe it will go through many switches. Okay. There is a program which is called traceroute. You can easily use that if you are, especially if you are on a Unix system. Windows पे भी उसका equivalent आता है, Mac पे भी है. So traceroute को use करके you can actually connect to an IP address and find the route to that guy. So आपको एक पूरी sequence मिल जाएगी कि आपके machine से लेके destination machine तक, जहां तक आपने trace route किया है, उसको वो पूरी tracing दे देगा. Every switch in between उसके बारे में वो आपको बता देगा. Okay. Now, then we also need to understand कि ये एक common language या protocol क्या चीज होती है, which means that any two devices on the internet, they should be able to talk to each other. If you load a web page, your browser sends a request to a web server at a far off place, and that web server responds. The only way that the web server will be able to respond is because the web server understands the language or understands the protocol that your web browser is talking. Okay. Similarly, you are using a WhatsApp client on your cell phone device, and your friend is also using a WhatsApp client on their cell phone device. These two clients are able to connect to each other and send messages to each other because they understand the language or the protocol talk between them. So whatever protocol is talked between two network applications, many different network applications will have different type of protocols. So for web access, you have HTTP protocol between a browser and a web server. For file transfers, there is another protocol called file transfer protocol, FTP protocol, between an FTP client and an FTP server. Okay. Similarly, your Zoom client speaks a protocol that Zoom server will understand. उस protocol का पता नहीं क्या नाम है. Whatever protocol Zoom is using, some proprietary protocol, but there has to be some protocol that your client, your Zoom client on your mobile phone or on your computer, your Zoom client is using that protocol in order to talk to a Zoom server somewhere. Okay. So this common language protocol is necessary, otherwise two devices on the internet, they will not be able to understand each other. उनकी आपस में understanding के लिए जरूरी है कि आप उस protocol को share करें. So everyone should understand the same. Now, the final thing is about the flow and congestion control. This may not be obvious to you right away, but think about it कि एक road है जिसके ऊपर एक flow हो सकती है गाड़ियों की. If you have more and more vehicles pumping onto that road, of course delays will be introduced. Okay. So what you will need to do is to avoid the congestion on the road, or you avoid the flow at a rate which is faster than the road can sustain. Usko control karne ke liye you have to have some mechanisms. We don't know those mechanisms, and we will not know those mechanisms until chapter 4 or 5. Okay. We will talk about that as the course progresses. So maybe in the last quarter of the course we will talk about flow and congestion control, or last 1/3 of the course. Okay. So these are the 5 big design considerations, big challenges. If we understand all of these, then we would
we would have a pretty decent idea about how networks are operating, especially how the internet is operating. Any question about any of these? Bilal, you have a question? Yes sir, I have a couple of questions. पहला जी. क्वेश्चन सर कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर में से है कि हमने नम से कनेक्ट किया हुआ है, नम ने पीटी से उसे, सो हु इज एट द टॉप ऑफ दिस चेन, कौन सारे मेन सर्वर्स हैं जो डील कर रहे हैं? There is nobody at the top of the chain. However, we have defined these service providers as having a tier. जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो टीयर 3 में आएंगे, जो उनसे बड़े होंगे वो टीयर 2 में आएंगे. The largest of the service providers in the world, जिसमें AT&T, Sprint, Verizon, PCCW, Singapore Telecom, इस तरह के आ जाते हैं. These are all tier 1 internet service providers, tier 1 ISPs, and they are all interconnected with each other. So if you like, you can say that these tier 1 service providers are at the top of the internet. We don't call it at the top of the internet, we call it as them forming the core of the internet. ठीक है? That makes sense. यानी कि if their servers goes down, तो यानी कि majority काफी एक बड़े portion का दुनिया में entrance से वो खत्म हो जाएगा. ऐसे ही होगा, but they do not have one server. They have the network. Internet service provider server नहीं provide करता. Internet service provider connectivity structure provide करता है. Very important to understand कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो फेसबुक नहीं है. फेसबुक ने सर्वर प्रोवाइड करने हैं जिसके ऊपर डेटा होस्ट हुआ हुआ है. गूगल ने सर्वर प्रोवाइड करने हैं जिसके ऊपर डेटा होस्ट हुआ हुआ है. CNN.com पे आप जाएं, कोई सर्वर होगा जहां पे वो डेटा होस्ट हुआ होगा. बट साइबरनेट एंड सुपरनेट एंड PTCL एंड Nayatel, these are not, they do not have server. well, उनके सर्वर्स हैं जो कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट उनका मेन पर्पस वो नहीं है. उनका मेन पर्पस है कि they will provide connectivity to you. तो उस कनेक्टिविटी की वजह से you can reach Facebook server, you can reach CNN server, you can reach BBC server, किसी के भी सर्वर को आप रीच कर सकते हैं. ISP का काम सर्वर प्रोवाइड करना नहीं. ISP का काम जो है वो लिंक्स एंड स्विचेस, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना है ताकि आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें. Does that make sense? Makes sense. सर सेकंड क्वेश्चन जो है वो फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल से है कि why do we need to control the flow from our side? Let's say कि मेरा राउटर जो है वो 10 Mbps डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है. अगर मैं उसको ज्यादा पंप कर भी रहा हूँ तो 10 पे जाके मैक्स पीक कर जाएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकेगा. तो why do I need to control it? देखें, अक्सर आप देखें जो रश वाली जो जगह होती है ना, ट्रैफिक कंट्रोल किया होता है उन्होंने, गाड़ियों को जो ना वो रोक के एक एक करके जाने दे रहे होते हैं. वो कहते हैं यार अभी एक वक्त में एक गाड़ी जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, फिर दोबारा गाड़ी भेजते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं. एंड द रीजन इज दैट कि अगर वो सारी गाड़ियां पंप कर देंगे हर एक को डिले मिलेगा. सो अगर आप कंजेशन और फ्लो कंट्रोल नहीं करेंगे तो एवरीवन वुड सफर. मैंने डेटा भेजना है, पैकेट्स भेजने हैं, विच इज अ स्मॉल चंक ऑफ डेटा. मेरे पैकेट जो है वो कहीं रश में गुम हो जाएंगे, गुम तो नहीं होंगे चले, लेकिन रश में वो फंस जाएंगे और उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल. क्या मैकेनिज्म होता है हमें उसका अभी पता नहीं है, एंड वी विल नीड टू वेट फॉर दैट फॉर सेवरल लेक्चर्स. मोहित आपका सवाल. जी सर, मेरा ये सवाल है, लाइक यू मेंशन फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल, तो DNS अटैक्स होते हैं ये जिसमें आप रिक्वेस्ट बार-बार भेजते हो, रिजॉल्वर आपको भेजता है वापस, तो वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं कंजेशन कंट्रोल से? नहीं, DNS अटैक्स जो होते हैं ना वो एक तरह के नहीं होते. देयर इज अ वैरायटी ऑफ DNS अटैक्स जो होते हैं. सो पीपल हु डू नॉट नो अबाउट DNS अटैक्स, अभी किसी को DNS का पता भी नहीं है. हम DNS के ऊपर आएंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जिसमें DNS एक है. तो DNS अटैक्स जो आपने बात की है उसमें यही होता है कि you overwhelm some of the servers जो बड़ा important रोल प्ले कर रहे होते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर में एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा में. इफ यू समहाउ ओवरवेल्म दोज मशीन्स, तो मसला ये होगा कि जो भी उनकी सर्विसेज को यूज कर रहा है उस बेचारे को सर्विस बहुत स्लो मिलेगी. आपको एक एग्जांपल देते हैं इसकी. DNS की मैं मिसाल नहीं दूंगा, आई विल गिव यू एन इक्विवेलेंट एग्जांपल, एंड द इक्विवेलेंट एग्जांपल इज कि ज़मील पे when you try to register for courses, जब वो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आ रही होती है तो बहुत ज्यादा रश लग जाता है. लोग जो है वो they suffer a lot of delay. बहुत डिले उनको मिल रहा होता है ज़मील को एक्सेस करने में. although के we try to make sure IT
folks जो हैं they try to make sure कि मल्टीपल मशीन्स के ऊपर मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है वो जंबील के होस्ट कर दें, उसके बावजूद भी जो है वो डिले हमें मिलता है, यू नो। एंड द सोल्यूशन फॉर दैट इज कि बहुत ज्यादा मशीनें लगा दें, बहुत बड़ा सा डेटा सेंटर हो जिसमें यू नो हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स के ऊपर जो है जंबील को होस्ट कर दें, किसी को भी जो है वो डिले नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस तो फिर ऑब्वियसली फिर डिले मिलना शुरू हो जाएगा। थिंक अबाउट फेसबुक सर्वर, फेसबुक के दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, यू नो, दे ट्राई टू एक्सेस द फेसबुक सर्वर्स। अगर एक ही सिंगल सर्वर होता फेसबुक का तो वो तो बेचारा चौक हो जाता बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई वी एक्सप्लेन्ड लास्ट टाइम कि फेसबुक, गूगल, याहू, CNN.com, these are the you know very high traffic sites. इन हाई ट्रैफिक साइट्स को जो है आप एक सर्वर से जो है वो सर्व नहीं कर सकते। इवन लम्स का जो वेब सर्वर है या LMS is hosted on 4 different servers, 4 different servers के ऊपर होस्ट हुआ है। इनफैक्ट 2 फिजिकल सर्वर्स, इसके ऊपर हमने एक फिजिकल सर्वर के ऊपर 2 वर्चुअल इंस्टेंसेस क्रिएट किए हुए। So that is why it is able to handle the load of all the students, you know। लेकिन बाज़ दफा जब बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो वो LMS भी थोड़ा सा बैठ जाता है, which means के रिस्पॉन्स जरा डिले के साथ आना शुरू हो जाता है। So I don't know if that completely answers your questions or not, लेकिन hopefully you know with the passage of time, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे we will इसमें yeah. जो आपने सर्वर्स की बात की लाइक वो कर देते हैं, तो इनमें जो कंजेशन कंट्रोल एक डायनो सा कंसेप्ट भी होता है, तो वो उसमें हेल्प करता है लाइक। मुझे आपकी आवाज नहीं सही समझ आई है, मफल थी। सर अब आ रही है आपको आवाज मेरी? जी जी सर मैं पूछ रहा था, आपने कंजेशन कंट्रोल में जब सर्वर्स की बात की कि वो लाइक हैंग हो जाते हैं जब उन पे जितना ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक आती है, तो वो जो डायनो सा कांसेप्ट होता है वो भी इसीलिए यूज होता है कंजेशन कंट्रोल के लिए? वे हाँ, उसके लिए अभी वेट करें, अभी टाइम मैं अभी क्लास के साथ साथ चलना चाहता हूँ। वी डोंट वांट के जो आगे अभी कॉन्सेप्ट्स आने हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आपको मिल जाएगी। टाइम आउट का कॉन्सेप्ट उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है। So why we study the internet? We study the internet because these days the internet is transforming everything. In fact, internet has transformed everything. The way we do business, everything is e-commerce now. घर बैठे फूड सब्जी सब कुछ ऑर्डर कर देते हैं। Advertising, cloud computing, everything you know we can think about, you know, about businesses. Internet is playing a central role in that. ठीक है। Social media, how people are connected to each other, email interactions, instant messengers, virtual world. So the way that we manage relationships is all controlled by the internet. The way we learn in education, we have a great role of the internet. इसके अंदर मैं Zoom भी ऐड कर देता हूँ, Wikipedia, MOOCs, search engine, Zoom, and you know many other services जहाँ पे आपको online courses मिल जाएंगे, Coursera and edX, all these platforms. The way we govern and view the law, internet plays a central role in that. E-voting, internet censorship, you can have policies around that, cyber attacks and copyrights. Internet is playing a central role in that, and also the way that we cure disease. So every facet of the world, आप उसको देखें उसमें इंटरनेट का कुछ ना कुछ रोल है, ठीक। So internet has, you know, changed the way we do business, the way we do research. तो business के अंदर इसकी क्या implication है? Many large and influential networking companies with enormous market capital, billions of dollars की ये company, hundreds of billions of dollars की ये companies हैं, Cisco, Broadcom, AT&T, etc. You know, look at these service providers and equipment vendors. ये networking equipment बनाते हैं या networking service provide करते हैं. So Cisco, Huawei, these are the equipment vendors. ये routers and switches बनाते हैं. Broadcom जो है उसके लिए chips बनाता है. AT&T, Verizon, these are the internet service providers, very large internet service providers. Akamai, ये आपकी content की caching के लिए इस्तेमाल होते हैं. We will talk about Akamai a little bit more when we go to the next chapter. लेकिन Akamai जो है वो ये make sure कर देता है कि दुनिया में कोई भी हो, high traffic web services जो हैं वो उनको very quickly available होंगे. So there is an enormous market for that. Networking is central to most of the technology companies that we have heard of: Google, Facebook, Microsoft, Amazon, VMware. All of these, you know, they use networking one way or the other. Similarly,
Not just businesses, but also internet research also has a lot of impact. 4 of the 10 most cited authors in computer science, their work is in networking systems. Many successful companies have emerged from networking research. Okay, so few defining characteristics of the internet. I'm just going to very quickly talk about those. So we talked about the structure of the internet, that there are end machines. These are end machines, and these end machines are connected to switches in a service provider. So LUMS is our service provider. We are connected to LUMS. So similarly, PTCL is another service provider. यहाँ पे once again एक ही switch show किया गया, लेकिन PTCL would have several hundreds of switches in their network, maybe thousands of switches in their network. Transworld is another large service provider. PTCL and Transworld are the only 2 internet service providers in Pakistan which provide international connectivity. All the other service providers, they provide connectivity within Pakistan. If you are a customer of Nayatel, Nayatel does not provide you international connectivity. लेकिन आप कहेंगे कि भाई Nayatel जो है वो international connectivity तो देता है, वो इस तरह देता है कि you connect your device to Nayatel and Nayatel will get the service from PTCL or Transworld in order to provide a connectivity outside. वो hierarchical structure है. So internet is a federated system. There are more than 18,000. An estimate is that more than 18,000 internet service providers, small and large. Okay, so and the internet is interconnecting all of these internet service providers. All of these service provider networks are interconnected with each other. ऐसा नहीं है कि कोई isolation के अंदर बैठा हुआ. Otherwise, purpose ही कुछ नहीं रहेगा. And they are all talking one common protocol, which is the internet protocol. All the machines which are connected to the internet, all the end devices which are connected to the internet, they are able to talk the internet protocol, which is a standardized protocol. Everyone speaks the same language. सबको पता है कि this is our German, and we will speak this language. Okay, so interoperability in a federated system is the most important goal. Why is interoperability important for the internet? Because you want people to talk to each other. अगर एक दूसरे से वो बात ही नहीं कर सकेंगे, एक सिस्को ने एक स्विच बनाया है और एक Huawei ने एक स्विच बनाया है, if these two guys are unable to talk to each other, to speak to each other or interoperate with each other, then obviously you cannot use them in the same network. लेकिन ऐसा होता नहीं है. We have network in which we have devices from different vendors. Huawei के भी लगे हुए हैं, Cisco के भी लगे हुए हैं, and other companies उनके भी devices लगे हुए हैं. Why? Because they speak common protocols. They are interoperable with each other. Interoperate एक दूसरे के साथ करते हैं. So this leads to a constant tussle between the businesses. Why? Because these competing service providers, Cybernet and Supernet, they are competitors of each other, but they have to provide connectivity to each other. Why? Because एक customer है Cybernet का, एक customer है Supernet का. If these two customers want to talk to each other, then Cybernet and Supernet, both of them are sort of obligated to provide that connectivity. Otherwise, उनके customer उनसे भाग जाएंगे, वो इनके individual customer चले जाएंगे. Cybernet and Supernet cannot say कि we will not provide connectivity to each other. ठीक है? So although they are competitor, they still need to work together. So very, very strange kind of a relationship. Okay, and a common protocol is used for the interoperability. The scale of the internet is huge. Almost 4.6 billion users, almost half of the world population, maybe slightly more. This figure is a little bit old. There are 1.2 billion online websites, a lot more unique URLs, 300 plus billion emails sent every day, more than 7 billion mobile phones, mostly smartphones. 7 billion में से पहले बहुत कम smartphones होते थे. But the percentage of the smartphones has increased tremendously in recent years. Why? Because the cost of the smartphone has come down quite a bit. आपको 10,000 15,000 रुपए में, within $100 you will be able to find a reasonable smartphone that you can use, on which you can do ride hailing. Careem और Uber उससे order कर सकते हैं, Food Panda की सर्विस उस पे चलेगी, and smartphone would have all these applications. Android run कर रहा है या iOS run कर रहा है. So 2.8 billion Facebook's monthly active users, more than 500 hours of video is uploaded on YouTube every single minute.
every single minute. हर एक मिनट में 500 घंटे से ज़्यादा वीडियो अपलोड होती है, which reminds me that we have a playlist for the course channel. So the first lecture, which was 2 days ago, has already been uploaded there. I'm not sure if anyone was able to see that or not, but we have already uploaded that. So this is part of, जब मैंने वो उसे upload किया था, so this was part of this statistics. Switches that move 300 terabits of data per second. 300 terabits of data. It's a huge amount of data. Links that carry 100 gigabit per second, or even more. Even at LUMS, we have 10 gigabit per second link. No, not all of them, but a few links on LUMS campus are operating at 10 gigabit per second. The one coming in the basement of SSE from the library building where IST resides, there is a link of 10 gigabit per second. There are a few other links as well. So you can see that there is a tremendous scale on the internet. हर चीज जो है वो इतनी बड़ी है. And there is also an enormous diversity and dynamic range. So communication latency can be microseconds to seconds, or even tens of seconds if you are using a network of a service provider which is not performing very well. So microseconds to seconds, order of 10 to the power 6. इतनी diversity है उसके अंदर communication latency में. Similarly, the bandwidth, as small as 1 kilobit per second, इतने भी slow connections आज भी exist करते हैं to hundreds of gigabits per second, and the ratio between these two is 10 to the power 7. 7 orders of magnitude difference between 1 kilobit per second and 100 gigabit per second. Okay. Packet loss means once you send a data packet, which is just a chunk of data, bits put together, so the chances that this packet will go from your machine all the way to the destination could be anywhere from 0 to 90%, or maybe even more. The technology, there is a diversity in the technology as well. We have seen optical fiber links, we have seen wireless links, we have seen satellite links. We have also seen copper links or DSL links, cable links, twisted pair links. Similarly, there is a huge diversity in end devices. Endpoint devices could be very small IoT devices, small sensors, could be cell phones, could be your desktops, could be a very high performing server in IST with a GPU in there, which can mine bitcoins, or at the other extreme, we could have very large data centers. And last time we said that a typical data center would have a few 100,000 machines, all interconnected with each other. So this data center will be acting as a single endpoint device. But internally it would have hundreds of thousands of machines. Okay. Similarly, there is a huge diversity and variety of applications that we see on the internet. किस तरह की applications हैं? Zoom, which we are using for video conferencing, live video, जो YouTube के ऊपर आप देख सकते हैं. Gaming applications, remote medicine, Facebook or social media, Twitter, etc. All of these applications, there is a huge diversity, huge variety of applications. Similarly, users के अंदर भी बहुत diversity आपको नजर आती है. कई governing users होंगे, PTA type के, governed user होंगे, poor आवाम जो हो गई जिसमें, operators हैं, selfish users हो सकते हैं, malicious users हो सकते हैं, people who are on BitTorrent, they only download stuff and do not upload the stuff. You can have selfish users. You can also have malicious users जो जाके आपको हैक करने की कोशिश करेंगे, and they will probably hack your system of the naive users. There can be users who are very internet savvy and computer savvy. There can be embarrassed users, paranoid, all variety of users. And the internet has constantly evolved. In the early days of the internet, in the 1970s compared with today, in the 1970s, 56 kilobit per second backbone links were pretty normal. In fact, if you just go back 20 years ago, even in Pakistan, if you get an internet connection at home, a regular one, a typical internet connection, 64 kilobit per second, which is very small. These days, nobody will even think about 64 kilobit per second के ऊपर कोई काम हो सकता है.
Today we have in excess of 100 plus gigabits per second backbone links. 100 plus gigabit per second backbone links. Okay, so internet has evolved tremendously. ये 56 kilobit per second से कहाँ चला गया? 100 plus gigabit per second पे चला गया. Also, it has evolved in the number of users. In the early days of the internet, there were less than 100 computers on the entire internet. Only a handful of sites in the US. Only a handful of sites in the US. Websites actually did not exist until early 1990s. पहली website जो है 1993, 1992, 1993 में आई होगी, when they made the first browser, Mosaic browser जब उन्होंने बनाया था. Now, constant evolution in terms of applications. Email was the killer application in the early days. Telnet and file transfers were the most used applications of that time. आजकल क्या होता है? आजकल you have millions of apps from the stores which are installed per day. हर ऐप का अपना अपना काम होगा. कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन होगी, कोई राइड हेलिंग एप्लीकेशन होगी, कोई मैप की एप्लीकेशन होगी, गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो आपको मैप दिखा देगी और उस पर राउट करवा देगी. आपको कोई फूड ऑर्डरिंग की एप्लीकेशन होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट is available in terms of an app. And this is a huge evolution from the early days primitive applications. आजकल तो ईमेल, टेलनेट और फाइल ट्रांसफर जो है उसमें से शायद ईमेल ही चलती है. टेलनेट और फाइल ट्रांसफर जो है not really very commonly used. कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर शायद इसको यूज करते हैं, बट कॉमन यूजेज के लिए जो अब वैसे ही जो है वो फाइल व्हाट्सएप पे उठा के भेज देते हैं. The operation of the internet is asynchronous. What we mean by that is there is a sender and there is a receiver. They do not work in synchronous mode. They work in asynchrony. उनका अपना अपना clock है. So fundamental constraint here is the speed of light. If I send something from my device to another device, it has to propagate in terms of electrical signals, or as an electromagnetic wave, or optical signals, also electromagnetic waves. Okay, so these electromagnetic waves can travel at a very, very fast speed. We know that, but they cannot travel more than the speed of light. They can travel at maybe 80% of the speed of light or 90% of the speed of light, which is huge. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second. Okay, so इसका बहुत बड़ा fraction जो है उस पे आप operate कर सकते हैं, but not more than this. And this is your fundamental constraint. Fundamental constraint. If I send an electrical pulse or electrical signal from here to Karachi, it will take some time to reach there. It will take some time to reach there. वो time जो है वो although बहुत छोटा time होगा, लेकिन उस time के अंदर जो है वो दुनिया की इधर की उधर हो सकती है. And we'll give you an example. Consider how many cycles does your 2.8 gigahertz CPU, and 2.8 gigahertz CPU these days is pretty common. हर मशीन के अंदर ये 2.8 gigahertz लगा हो, 2.8 नहीं 2.4 लगा होगा, या 3.2 होगा, 3.8 होगा. So this is a typical CPU speed, 2.8 gigahertz CPU speed, which means कि एक second के अंदर 2.8 giga cycles of the CPU execute हो जाती है. They execute before it can possibly get a response against a message it sends to a server from Karachi. Okay? So you are sitting in Lahore. Let's say you are sitting in Lahore. You send something to Karachi and you get the response back. इतनी देर में आपका CPU जो है उसने कितनी cycles चलाई होंगी? 10 cycle, 20 cycle, 50 cycles. Let's try to find out. Okay? The distance from Lahore to Karachi is approximately 1225 kilometers, plus minus something. कुछ थोड़ा बहुत give and take. The traveling time from Lahore to Karachi, if I send a data packet from here to Lahore to Karachi and then get the response back, traveling from Lahore to Karachi at the speed of light, you cannot go faster than that, at the speed of light will take you approximately 4 milliseconds. इससे तेज नहीं आप जा सकते. जो एक डेटा पैकेट आपने यहां से लाहौर से भेजा है उसको कराची पहुंचते पहुंचते अगर कुछ भी डिले ना हो, तो फिजिक्स हमें ये बताती है कि you cannot send that packet to Karachi and it will take more than 4 milliseconds, approximately 4 milliseconds. 4 milliseconds से कम में आप नहीं भेज सकते लाहौर से कराची. This is the fundamental limit defined by physics. Okay?
and then back to Lahore another 4 milliseconds. So total of almost 8 milliseconds आपको लगेंगे. यहाँ से आपने एक पैकेट भेजा कराची, कराची से वो पैकेट आपके पास वापस आया. अब आपने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, आपने मे बी यू सेंट अ वेब रिक्वेस्ट और वहां से कुछ रिस्पॉन्स आया. इतनी देर में क्या हो गया, दुनिया में क्या चेंज आ गई इतनी देर में? थिंक अबाउट कि 8 मिलीसेकंड के अंदर आपकी कितनी सीपीयू साइकिल्स कंज्यूम हो गई. So you are running at 2.8 gigahertz, your CPU is running at 2.8 gigahertz. So 8 millisecond के अंदर, which is 0.008 seconds, आपने 22 million cycles execute हो गई हैं. अब हम कह रहे हैं कि इतनी तेज डेटा भेजा है, स्पीड ऑफ लाइट पे आपने कराची डेटा भेजा है और वहां से उसका फौरन ही जवाब आया विदाउट एनी डिले. और इतनी देर में जो है वो हमारा जो सीपीयू है वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया, उसकी दुनिया तब्दील हो गई है. 22 मिलियन साइकिल्स उसमें ज्यादा एग्जीक्यूट हो गई. सो दस कम्युनिकेशन फीडबैक और कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डेटेड, हमेशा पुरानी मिलेगी. लाहौर से कराची अगर भेज रहे हैं तो आपको बहुत ही पुराना जो है वो मिल रहा है, although it's only 4 millisecond old, but 4 millisecond in terms of CPU cycles time is very old. Okay. Now another thing related to the internet is that it is prone to failure. To send a message, all the components along a path must function correctly. Okay? So for example, if this is my device, okay, let's say this is a smartphone and it wants to send data to another smartphone, कोई एक WhatsApp मैसेज भेज रहे हैं और दरम्यान में हमें पता नहीं क्या बात होगा, ये एक स्विच आया, फिर उसके बाद ये एक और स्विच आया, फिर उसके बाद ये एक और स्विच आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये एक और स्विच आया. मैंने सिर्फ यहाँ 4 स्विचेस बना, ठीक है. Typically you can have many switches in between. So if you send a data packet from here to, let's say, US, about 30 hops, which means के 30 hops आपको करने पड़ेंगे, 30 उन switches आपके दरम्यान में आ जाएंगे, 30 switches आपके दरम्यान में आ जाएंगे, ये 31 switches आ जाएंगे, ठीक है. So to send a message, all of these switches must be functioning properly. All of these links must also be functioning properly, means they should be up. Link down भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन ये these links should be up. Okay, so everything all the way from this guy to this guy must be functioning properly. ये पूरा का पूरा रास्ता जो है, ये पूरा का पूरा रास्ता आपका error free होना चाहिए. When I say error free, all links, all switches on the way should be functioning properly. So consider if you have 50 components, switches and links, each of which works correctly 99% of the time. ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा availability है, 99% of the time everything is working, but 1% of the time, 1% उसका chance है probability of failure. Then if you have 50 such components, that the chances that something will fail, at least one thing will fail somewhere on the way, there is 40% chance that something will fail. 40% chance that something will fail. And recall that this is related to the scale. There is lots and lots of components on the internet. Internet का scale enormous है. कितने switches हैं, कितने routers हैं, कितने links हैं. The scale is huge. The chances that something will be failing somewhere are extremely high. हमने ये सिर्फ 50 components की example दी है कि जिससे almost 40% rate हो जाता है कुछ fail हो रहा होगा. Although कि individual component की आपकी probability 99% है, 99% chance है कि आप उसको देखेंगे तो वो आप ही होगा, काम कर रहा होगा, लेकिन something will be failing. The chances of that are pretty high. Okay. So internet is an engineered system which is constrained by the limits of available technology. Link की जो bandwidth है वो एक constraint है, switch का port count वो एक constraint है, bit error rate, if you send 1,000,000 bits, how many of those on average will be in error? That would be another engineering constraint that we will have to deal. So if we just recap it, the internet is a federated systems, different service provider talking to each other of enormous scale, वो हमने उसकी examples बहुत ज़्यादा देखी, with dynamic range, wide variety of errors, wide variety of links, wide variety of applications, wide variety of switches, wide variety of bandwidths on those links, diversity, and constantly evolving, went from very few kilobits per second in 70s to hundreds of gigabit per second these days.
it's asynchronous in operation, which means that I do not get the feedback immediately. If something goes wrong, it will take me a long time to learn that something has gone wrong. And when I say long time, that doesn't mean कि in terms of absolute time. हो सकता है वो 2-4 मिलीसेकंड में आपको पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन उस 2-4 मिलीसेकंड के अंदर जो है वो that's a very long time in terms of a link which is sending 1 terabit per second. तो 1 सेकंड में वो तो टेराबिट भेज देता है. 1 मिलीसेकंड भी अगर लग गया तो उसके अंदर 1 गीगाबिट्स आपकी चली गई. It's failure prone and constrained by what's practical to the engineer. But we know is that the early internet pioneers, उन्होंने जब डिजाइन किया था ये 70s के around, they came up with a solution that just happened to be very, very successful beyond all imagination. Now these days we can see that everything is dependent upon the availability of the network connectivity. Several enduring architectural principles and practices, they emerge from that work. ये वहां से evolve हुई हैं, emerge की हैं. Late 80s से पहले इंटरनेट के ऊपर congestion control नहीं होता था. Congestion control नहीं होता था. Then it just so happened, although there were very, very few hosts on the internet at that time, इतना widespread नहीं था late 80s के अंदर. Very, very few hosts on the internet. It just happened कि congestion आ गई. किसी ने बहुत ज़्यादा data भेजना शुरू कर दिया, and the link speeds went to very, very, very slow rates. Few bits per minute. ठीक है. जब ये हुआ तो फिर पता चला कि ओह, हमें तो congestion control करने की जरूरत है. Then we designed the congestion control algorithms, ठीक है, which got evolved obviously and emerged. So जहाँ पे ये principles and practices, बहुत सारी ऐसी situations आई जहाँ पे हमें नई चीजें फिर invent करनी पड़ गई. So the architecture principles which are behind the internet, one is decentralization. There is no God here. यहाँ पे कोई ऐसा एक central entity नहीं है, कोई oracle नहीं है बैठा हुआ जो decide कर रहा है कि मेरे से पैकेट उठा के किसी दूसरे को भेजना है तो वो किस रास्ते से जाएगा. It's all decentralized. All decisions are made at switches. Switch ने जो है वो पैकेट को देखना है, पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन IP एड्रेस लिखा होगा, उसको देख के फैसला करना है इस पैकेट को जो है मैंने कौन से आउटगोइंग इंटरफेस पे भेजना है और भेज देना है. ठीक है, और भेज देना है. And then we talk about the packets. It's the chunk of data that you send from the source machine to the destination machine. We will talk about statistical multiplexing. What that means is, ये भी आपको clear करते हैं. But at a high level, statistical multiplexing means कि जैसे एक रूम है और वो एक टाइम के ऊपर एक ही बंदा यूज कर सकता है. Statistical multiplexing means कि you allocate that room to many people और वो सारे जो है वो उसको एक ही टाइम के ऊपर यूज कर लें. जिस तरह मिसाल के तौर पे लम्स में हॉस्टल एलोकेट कर दिया 3 लोगों को एक कमरे में, एंड द असम्पशन इज दैट के तीनों को साइमल्टेनियसली जरूरत नहीं पड़ेगी. डोंट टेक इट सीरियसली, ये वैसे ही थोड़ा सा जोक था. So best effort service, we will talk about the best effort service. This is the internet protocol which provides data delivery on the internet. There is no guarantee your data will go from point A to point B. Source to destination, there is no guarantee that your data will go there. It would be a best effort service. हम अपनी पूरी सी कोशिश करेंगे. The data may get there, but it may not get there. There is some chance that it will not get there. So somehow you will need to recover from the situation. If you send a file from your machine to another destination machine, if the file doesn't get there, then you will have to send it again. If the file gets there, but one of the packet gets dropped, then somebody must be taking care of that. क्योंकि एक पैकेट भी अगर ड्रॉप कर गया तो वो फाइल जो है वो मेरी करप्ट हो जाएगी. उसके बीच में से मैंने कुछ डेटा निकाल दिया, which is just a sequence of zeros and ones. तो अगर उसमें से कुछ थोड़ा सा चंक निकल गया है तो फाइल इज यूजलेस फॉर द एंड मशीन. आपके पास एक 8 GB की आपने एक मूवी डाउनलोड की है इंटरनेट से, 8 GB की HD के अंदर. सबको मूवी देखने का शौक है तो यू ट्राई टू डाउनलोड मूवीज इन हाई डेंसिटी. सो 8 GB की मूवी आपके पास आई है, उसमें से एक बिट जो है वो मिस हो गई है या 4 बिट्स मिस हो गई हैं. यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. वो मूवी चलेगी नहीं है, करप्टेड फाइल होगी, करप्टेड फाइल. सो when you send a Word document from your machine to another machine, it goes there intact. Otherwise, the other guy would not be able to open it. Yeah. So best effort service.
so best effort service के अंदर how do you guarantee कि if you send a file from one place to another place it just goes intact. इंटरनेट तो ये सर्विस नहीं देता, इसका मतलब है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ उसके ऊपर कुछ we'll have to make some fixes, कोई जुगाड़, कुछ something. We will talk about that later on. And then we have this end-to-end design principle that you have a network application running on your machine, I have a network application running on my machine. How are they talking to each other? What if the communication fails? And then we will talk about the layered decomposition. Last time we gave a hint that you can see two layers of the internet communicating with each other. One is the application layer, your network application, which could be your WhatsApp or which could be your web browser, talking to somebody else, another network application at the other end. Okay? It's visible to you. And the other thing which is visible to you is the physical connection. So there is one thing which is application, and then another thing which is the physical connection. ये दो layers हैं और ये layers हमारे पास available हैं. Physical connection जिसने डिजाइन किया है उसको पता है वो तार कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर डेटा किस रेट के ऊपर ट्रांसफर करना चाहिए, whether it should be an optical fiber, whether it should be a wireless link, whether it should be a coaxial cable. जिसने ये एप्लीकेशन डिजाइन की है उसको पता है मैंने ये कोड लिखना है, इस कोड ने क्या फंक्शन करना है, whether this code is written in C, C++ or Python or Java, किसी भी लैंग्वेज में लिखा है. But the job of this application is piece of software is to make sure कि जो भी आप उस एप्लीकेशन से करना चाहते हैं, राइड हेलिंग के लिए आपने ड्राइवर को बुलाना है तो उसके लिए, या ग्रोसरी ऑर्डर करनी है आपने ऑनलाइन, उसके लिए जो एप्लीकेशन है, so these applications would know what to do. But there is a gap in between. ये एप्लीकेशन सीधी की सीधी जाकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रन नहीं करेंगी, दरमियान में कुछ ना कुछ चीजें होंगी. And we will talk about those layers of the network. ये layer decomposition है, दो layers clearly visible to the end users, clearly visible to us, but दरमियान वाली चीजें not visible to us. We will talk about those, और ये layered decomposition के बारे में हम बताएंगे. So IP as a narrow waist in layers में internet protocol use होता है, and we use IP addresses for that. So the network architecture is more about thinking rigorously rather than doing rigorous math. इसमें कोई बहुत rigorous math नहीं होगा, लेकिन you will have to think rigorously, and more about understanding of the trade-offs than running the benchmarks. And it is more about the practicality rather than the optimality. Optimality जो इतने बड़े scale के ऊपर हम achieve ही नहीं कर पाएंगे. It is entirely possible that a packet that I send from my machine to a machine in Europe, वो किसी ऐसे path से जाता है जो non-optimal path है. But that's okay. We will live with that. Why? Because it is practical. ठीक है? Optimality achieve करते करते हो सकता है कि हमें बरसों लग जाए और हम वो पैकेट ही ना पहुंचा पाए. So done right, the network architecture, internet network architecture could be a very powerful thing. Course के अंदर we will talk about how the internet works, the principles behind the working of the internet, and why are those principles chosen. कोई और तरीका क्यों नहीं कर लिया दो network entities के communicate करने के लिए? Why did we choose a way that we chose rather than choosing something else? ठीक है, क्यों हमने वो language इस्तेमाल की, वो protocol इस्तेमाल किया जो इसके लिए useful होगा, and how to reason through a complicated network design problem. So the topics that we are going to cover, we'll talk about the packets. We have already talked about packets. We'll talk about the circuits in rest of today's lecture. We'll talk about delay, loss, and protocols in the rest of the course. How the insides of the internet work. Insides of the internet means service provider के network के अंदर क्या होता है, वहाँ पे internet protocol कैसे काम करता है, routing protocols कैसे काम करते हैं. These are all the examples of routing protocols. How the endpoints use the network. You have all used HTTP. अपने ब्राउजर में सबने HTTP टाइप करके www.cnn.com पे गए होंगे, या bbc.com पे, या zambil.lums.edu.pk पे. So everyone has used HTTP. So how the endpoints use the network. DNS, किसी ने पहले सवाल पूछा था, domain name system. How does that work? We will talk about that. How does TCP work? Many of you might have heard the name of TCP/IP. What is that? What kind of protocol is that? It is a protocol, but what kind of protocol is that? ये किस लिए इस्तेमाल होता है? TCP और IP उसमें फर्क क्या है? ये दो अलग-अलग protocols हैं.
So we will also talk about the crucial lower layer technologies कि Ethernet कैसे काम करता है. Ethernet means, you know, this piece of wire which is going from my desktop into the wall jack, or wireless Ethernet using which my iPad is communicating with the Wi-Fi access point, which is just outside my office. Okay? Then we may have time to cover some of the newer topics: Wi-Fi, data centers, the software-defined networking, maybe a little bit about 5G. We'll try to talk about that. Security, we may not have the time to talk about it. And also, you know, because we have other courses which cover security in great detail, also offered at in the CS department at LUMS. So any questions so far? Any questions so far? Good question. वैसे मेरा क्वेश्चन है जी जी. वैसे मैंने पूछना था कि जो बुक यूज कर रहे हैं उसका हम कौन सा एडिशन यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली. बुक का जो है इस वक्त I think the 6th edition is available in the market. I will check and reconfirm. जी sorry. 8th एडिशन भी आ गया हुआ है. इसका 8th एडिशन तो आ गया, लेकिन हमने ये देखना होगा लोकल मार्केट के अंदर कौन सा इजीली अवेलेबल है. I am not sure whether the 8th edition is available in Pakistani market or not. If it is available, we will use that. If it is not available, then we will use the one which is available in the local market. We will confirm that. ऐसे पीडीएफ यूज नहीं कर सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ अस विल बी यूजिंग पीडीएफ्स, तो हमारा काम तो उससे भी चल जाता है. काम तो हमारा उससे भी चल जाता है. That's true. लेकिन वो पता नहीं 8th एडिशन की पीडीएफ अच्छी क्वालिटी में मिलेगी नहीं मिलेगी. We will figure out. ठीक है. So this book has evolved over time. लेकिन फर्स्ट एडिशन से लेके एटलीस्ट 6th एडिशन तक, 7th एडिशन भी मैंने देखा है, उस तक जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं आई है. There is some small changes that has been introduced, but कोई ऐसे कोई बहुत ज्यादा significant change नहीं आई है उसके अंदर. जी बिलाल, आपका सवाल. सर मैंने भी क्वेश्चन किया था, बस मैं नोट कर लेता हूँ. जी ठीक है. शहजाद, आपका सवाल है. शहजाद सुल्तान. जी सर, मैंने ये पूछा था, आपने पिछली स्लाइड में बोला था कि 50 कंप्यूटर्स मतलब जिनके मतलब 99% ऑफ टाइम है कि वो मतलब एक्टिव वर्क करेंगे, तो मतलब वो आपने मतलब नीचे एक्सपेरिमेंट लिखी थी कि 40% उसके चांस है कि वो फेल होगा, तो वो मतलब आपने मतलब किस बेसिक्स पे लिखा था? वो बेसिक प्रोबेबिलिटी से वो निकाल सकते हैं उसको सेपरेटली. ये मैं क्लास एंड कर लूं, उसके बाद आप बेशक पूछ लीजिएगा. ठीक है. सो बेसिकली उसमें क्या था कि कंपोनेंट सारे लगे हुए हैं, 50 कंपोनेंट हैं, हर एक अप होने का चांस जो है वो 99% है. ठीक है. व्हाट आर द चांसेस दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल फेल? क्योंकि अगर एक भी फेल हो गया ना, एक भी फेल हो गया तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी हमारी. एक रास्ता है जिसके ऊपर हमने 50 राउटर से गुजर के जाना है, 50 रिसोर्सेज से गुजर के जाना है. 50 में से हर एक की चांसेस जो हैं अप होने की, वो 99% चांस है कि वो अप होगा. लेकिन समथिंग विल फेल समवेयर. इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम फेल्स इज, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. ठीक है. यू कैन कंप्यूट दैट विद बेसिक प्रोबेबिलिटी. हम इस लेक्चर के बाद जो है ना उसको आपको करके भी दिखा देंगे. ठीक है. ओके. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज नेटवर्क मेड ऑफ. व्हाट इज नेटवर्क मेड ऑफ? हमने देखा कि नेटवर्क इज मेड अप ऑफ switches and links, and then end machines, which could be servers, which could be your mobile devices, which could be very small IoT devices, which could be my desktop, which could be an iPad, which could be a smartphone, which could be a complete data center, are connected to the network. ये सारे end devices हैं, end machines हैं, end systems हैं, which are connected to the network. Network is composed of switches which are interconnected with each other through links. और ये links जो हैं ये optical fiber links हो सकते हैं, ये twisted pair wire के links हो सकते हैं, coaxial cable के links हो सकते हैं, Wi-Fi के links हो सकते हैं. ठीक है. So the network is made up of switches of varying capacity. कुछ बहुत small switches हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको example दी थी last time कि I have a very small switch, ये 1500 रुपए या 1800 रुपए का था शायद. ये मैंने कुछ साल पहले खरीदा था और ये मेरे पास डेस्कटॉप के साथ पड़ा हुआ है. इसके साथ मैंने और डिवाइसेस भी कुछ लगाए हुए हैं. ठीक है. बट स्विचेस कैन बी वेरी 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 एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है. सो
we'll talk about what is network made of, how it is shared, and how do we evaluate a network. उसको evaluate कैसे करते हैं, sharing उसकी कैसे होती है. Internet is a shared commodity, उसको हम कैसे share करते हैं. और फिर ये कि इंटरनेट के ऊपर परफॉर्मेंस कैसे होती है. कभी हम देखते हैं कि you are downloading a video, कभी तो वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे आ रही होती है, कभी जो है वो फंस जाती है, कोई इतनी अच्छी स्पीड पे नहीं आ रही होती है. सो दैट मींस देयर हैज टू बी सम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द नेटवर्क के आपका नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है या नहीं अच्छा काम कर रहा है. ठीक है. So if we take a look at what does it take to deliver a web page to your web browser, so all you need to do is कि in your web browser you type the name of the URL. आपको यहाँ पे URL लिख देते हैं www.cnn.com or in this case bbc.co.uk लिखा हुआ है. So what happens is behind the scenes your web browser will talk to the internet. Over the internet it will connect to a web server. वो कौन सा web server होगा? Where the bbc.co.uk उन्होंने अपने वेब पेजेस होस्ट किए हुए होंगे. वो अपने वेब पेजेस उन्होंने होस्ट किए होंगे, और हो सकता है कि उन्होंने अपने पास सर्वर रखे हुए हो सकता है उन्होंने किसी सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे वो सर्वर रखे हुए हो सकता है अमेज़न से उन्होंने कोई स्पेस रेंट कर ली हो सकता है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से कोई स्पेस रेंट कर ली हो सकता है उन्होंने रैक स्पेस व्हिच इज अ कंपनी वहां से कोई स्पेस रेंट कर ली हो और वहां पे अपने वेब पेज होस्ट कर दी हो. सो योर रिक्वेस्ट विल गो टू दोस सर्वर्स मैजिकली. हमें अभी पता नहीं है कि ये कैसे ऐसा हुआ कि आपके वेब ब्राउजर से जो पैकेट्स गए which are forming these HTTP request, ये एक HTTP request है, वो जाके उस सर्वर पे लैंड कर गए और वहां से फिर आपको जवाब भी वापस आ गया. ये कुछ मैजिक हुआ है यहाँ पे, and hopefully by the end of the course we will understand pretty much everything about the magic. ये इस मैजिक का पूरा पता चल जाएगा. ये तो हमें शायद अगले 5-6 लेक्चर्स के अंदर ही पता चल जाएगा कि ये HTTP रिक्वेस्ट कैसे जा रही है और इसका जवाब कैसे आ रहा है. ये इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो स्विचेस कैसे काम कर रहे हैं इस इंटरनेट के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन द बैकग्राउंड, in order to learn that we will need to wait until maybe 3/4 of the semester or until the end of the semester. Yeah. So what we have here is if you look at this simple communication जो हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, जो है एक एड्रेस लिख देते हैं www.xyz.com और cnn.com और news.pk or junk.pk, something like that. So what we need is an addressing system जिसकी नीड हमने पहले भी बताई है कि एड्रेसिंग सिस्टम किस लिए चाहिए होता है कि हर एक का नाम होना चाहिए. इस ब्राउजर ने किस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करना है उसका कोई एड्रेस होना चाहिए, एंड दैट एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस. That address is an IP address, and this IP address is typically some number 171.64.3.92. This is the IP address. ये इस तरह से लिखा होता है. 8 bits here, 8 bits here, 8 bits here, 8 bits here. ये total 32 bits का नंबर होता है, 32 bit number. So this would be the IP address or the address of each machine. Every machine on the internet would have a unique IP address, Okay? Now you might say okay, 2 to the power 32 is the maximum possible number of the machines that you can have on the internet. The short answer is yes, that is the maximum number. अगर उससे ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि 2 to the power 32 is about 4 billion. अगर 4 बिलियन से ज्यादा मशीन आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे? 4 बिलियन से ज्यादा आ गई हैं, 7 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस हैं हमारे पास, उसके लिए हमें फिर कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी. ठीक है, वो ट्रिक अभी नहीं पता हमें, उस ट्रिक के लिए जो है वो हमें चैप्टर 4 का वेट करना पड़ेगा. नाउ वी आल्सो नीड अ नेमिंग सिस्टम. व्हाई इज अ नेमिंग सिस्टम नीडेड? इफ वी हैव एन एड्रेसिंग सिस्टम, व्हाई डू आई नीड ए नेमिंग सिस्टम? एनीवन, कोई आंसर करना चाहेगा इसका? If we have an addressing system, हर एक को एक एड्रेस दे दिया है तो मैंने जिसके पास डेटा भेजना है उसको मैं डेटा भेज दूंगा और वो पहुंच भी जाएगा. either way वो पहुंच भी जाएगा. I still need a naming system. Why do we need a naming system? जी बिलाल. आंसर जो है वो स्लाइड पे ही लिखा हुआ है. To give computer human readable names. Human readable names, बिल्कुल सही है. Human readable names. I don't want to type this 171.64.3.92
in place of www.bbc.co.uk. It's very easy for me to remember www.bbc.co.uk. It is very hard for me to remember 171.64.3.92. ये उसका है नहीं वैसे, लेकिन नंबर्स को याद रखना बहुत मुश्किल होगा, इन निमोनिक्स को, नेम्स को याद रखना बहुत आसान होगा, और इसीलिए जो है वो हम ये नेमिंग सिस्टम. सो दैट मींस somebody has to translate. By the way, अगर मैं यहाँ पे 171.64.3.92 जो भी bbc.co.uk का इक्विवेलेंट IP एड्रेस है वो लिख दूंगा, ब्राउजर फिर भी काम करेगा, वो उसी तरह से रिस्पॉन्स लेकर आएगा, उसी तरह से वेब पेज लोड करेगा जैसे उसने bbc.co.uk लिखने से करना था, कोई फर्क नहीं है उसमें. The only difference is that if I write www.bbc.co.uk here, your browser behind the scenes will still translate this www.bbc.co.uk to an equivalent number, to an equivalent IP address, और वो IP एड्रेस को जो है आपका पैकेट भेज देगा. ये जो आपने वेब रिक्वेस्ट यहाँ पे लॉन्च की है, ये रिक्वेस्ट in terms of packet, in the form of packets, will go to that destination जिसका IP एड्रेस किया होगा. So IP एड्रेस में ट्रांसलेशन करनी ही करनी होगी उस ब्राउजर ने, और वेब ब्राउजर कैसे करेगा वो खुद से नहीं कर सकता, उसको किसी चीज की जरूरत होगी, और वो क्या चीज है जिसकी जरूरत होगी, उसको हम DNS बोलते हैं, domain name system. So that means whenever in my browser I type www.cnn.com, so behind the scene the web browser will contact the DNS system, और DNS system से राब्ता करके वो कहेगा भाई please translate www.cnn.com for me into an equivalent IP address, and they will get the IP address. ठीक है, अब जिस सिस्टम ने ये चीज ट्रांसलेशन करनी थी, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो अर्लियर किसी ने पूछा था क्लास के शुरू में कि ये DNS के ऊपर अटैक हो जाए, सो वो सिस्टम जिसने वो नाम ट्रांसलेट करना था www.cnn.com को एक इक्विवेलेंट IP एड्रेस में, जो cnn.com की मशीन कहीं इंटरनेट पे लाई करती होगी किसी भी जगह पे, उसके साथ आपका राब्ता करवा देगा फिर. ठीक है, सो वो IP एड्रेस DNS सिस्टम ने मुझे बताना है. इफ द DNS सिस्टम इज अंडर अटैक और इट गेट्स अटैक, so that means या तो वो मुझे जवाब ही नहीं देगा या गलत जवाब दे देगा. In both cases मारे गए. You will not be able to load the page for the intended site that you are trying to load. Yeah. So naming system is also essential. Now building links, Ethernet, fiber, wireless, ये सारे भी आपको सब जरूरत होंगे, which are part of the internet. ये दरमियान में है, ये आपके वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, उनके दरमियान में एक पूरा इंटरनेट है, which will comprise of Ethernet, fiber, wireless, cables, etc. And then there will also be packet switches which will be interconnected with each other through these links, through these building links. And these packet switches are deployed hierarchically. वो हमने पहले देखा कि LUMS ने अपने packet switches deploy कर दिए. I think a few tens of packet switches here, less than 100. ठीक है, शायद अब 100 से ज्यादा भी हो गए हो, but not too much more than that. So LUMS ने अपने switches deploy किए हुए होंगे, PTCL ने अपने switches deploy किए हुए होंगे, Singapore Telecom ने अपने switches deploy किए हुए होंगे. So this would be the structure of the internet between a web browser and a web server. Okay. So this will look like the structure. So now let me talk about how is the internet shared? How is the internet shared? Okay. हम dedicated network सबके लिए नहीं रख सकते. For every single piece of conversation, we cannot have a dedicated internet. ये जो internet अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, everyone is connected through a through their Zoom clients. ठीक है, I am connected through a Zoom client. ठीक है, ये हमारे Zoom के clients जो हैं वो connected हैं, तो my audio is being converted into digital audio, and that digital data in the form of packets is going through the Zoom system, और आप सबके पास जा रहा है, वो सबके पास वो broadcast हो रहा है. ठीक है, the internet over which that data is flowing, is not my internet or your internet. It's a shared internet. It's the shared internet. How is that internet shared? When I say the internet is shared, that really means the links and the switches are shared. The links and the switches which make up the internet are shared. एक स्विच जो ये
मेरे फ्लोर पे लगा हुआ है, आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, यहाँ फ्लोर पे जो लगा हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये इस पे मेरा नाम लिख दें, भाई ये मेरा स्विच है, इससे कोई और किसी का डेटा नहीं जाएगा। एवरीवन who is sitting in the same wing will be probably be connected to the same Wi-Fi access point, उन सबका भी डेटा वहीं से जा रहा होगा, उसी स्विच से जा रहा होगा। So what are the sharing paradigms? Sharing की consideration करते हैं। So let's say this blue guy wants to talk to this blue guy, तो उनके दरमियान में ये एक path exist करता है, and the packets will take this, ये जो पर्पल पाथ आपको शो किया हुआ है, ये यहाँ पे पैकेट्स फ्लो करेंगे, ये पैकेट्स की फ्लो का पाथ बताया हुआ है, ठीक है। लेट्स से दिस गाय वांट्स टू टॉक टू दिस गाय, इनके दरमियान ये डॉटेड ब्लू पाथ है, और इफ यू लुक एट द डॉटेड ब्लू पाथ, वो थोड़ा सा ओवरलैप करता है इस पर्पल पाथ के साथ। सिमिलरली ये ग्रीन वाला जो पाथ है, ये भी उस पर्पल और ब्लू के साथ ओवरलैप करता है। सो यू कैन सी कि ये वाला जो लिंक है ये दरमियान में, दिस लिंक इज अ शेयर्ड लिंक। All the three conversations which are happening, when I say conversation, that really means the packet exchanges between the green conversation and the blue conversation and the purple conversation, all the packets belonging to those three conversations are traversing the same link. ये एक ही link को traverse कर रही हैं। Now, you might say कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक कमरे के अंदर अगर दो conversations simultaneously हो रही हो, I am talking to somebody sitting in front of me and then there is another conversation happening, ये बड़ा जो है खिचड़ी पक जाएगी, पता नहीं चलेगा किसी को क्या। हाँ, एक काम हो सकता है कि if I talk to one person और थोड़ी देर के लिए मैं बात करके खामोश हो जाऊं, फिर मैं दूसरी पार्टी, एक और पेयर है, वो भी उसी कमरे में बैठा हुआ, वो भी बात कर रहा है, उसको मैं बात करने दूं, फिर उसके बाद अपनी टर्न ले लूं, फिर उनको बात करने दूं, फिर अपनी टर्न ले लूं। This way you can share. You can time share an environment. Similarly, यहाँ पे भी आप शेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप शेयरिंग कर सकते हैं। Not just time sharing, यहाँ पे हम एक और तरीके से भी शेयरिंग कर सकते हैं। वो कैसे शेयरिंग कर सकते हैं? हम बैंडविड्थ की शेयरिंग कर सकते हैं। What does that mean? I will give you a practical example. सब लोगों के घर में केबल टीवी आता है, या many people would have cable TV. एक सिंगल केबल आपके पास आ रही होती है, एक सिंगल केबल आपके पास आ रही होती है, लेकिन उसके ऊपर कितने बेशुमार चैनल्स आ रहे होते हैं, कितने बेशुमार चैनल्स होते हैं। एवरी चैनल विल हैव देयर ओन फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेटेड टू देम, और वो फ्रीक्वेंसी बैंड एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते। एक 6 मेगाहर्ट्ज का, 6 मेगाहर्ट्ज का एक बैंड एलोकेटेड है जियो टीवी को, एक 6 मेगाहर्ट्ज का बैंड एलोकेटेड है एयरवाई टीवी को, एक 6 मेगाहर्ट्ज का बैंड एलोकेटेड है ESPN स्पोर्ट्स टीवी को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर एक को एक 6 मेगाहर्ट्ज जो है वो एलोकेटेड है, सो दैट योर एंटायर केबल bandwidth is divided into these 6 megahertz के चंक्स में, और हर एक को एक वो चैनल एलोकेटेड है। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं। तो दो मैंने मेथड्स बताएंगे, शेयरिंग के दो अलग-अलग तरीके बता दिए। एक तरीका ये है कि जहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी शेयरिंग कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे टाइम शेयरिंग कर सकते हैं, कि पहले मैं बात कर लूं, फिर थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा बात कर ले, फिर उसके बाद कोई और तीसरा बात कर ले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। सो शेयर्ड लिंक एंड स्विच रिसोर्सेज। So now there are two approaches to sharing the network resources. Two approaches to sharing the network resources. एक तो possibility है कि you do the reservations, and the other possibility is you do it on demand. ऐसे ही हो सकता है ना कि let's say I want to have a meeting, तो ये मेरे ऑफिस के सामने एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वो कॉन्फ्रेंस रूम मैं रिजर्व करवा दूं कि 4 बजे से 5 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस रूम मेरे लिए रिजर्व है, और फिर जब 4 से 5 बज जाए तो आई जस्ट गो अहेड एंड यूज दैट रूम अपनी मीटिंग के लिए, जो भी कुछ करना है। ठीक है। अल्टरनेटली व्हाट आई कैन डू इज कि मैं 4 बजे वहां पे वॉक इन कर जाऊं, 4 बजे वहां पे वॉक इन कर जाऊं ऑन डिमांड आई जस्ट वॉक इन देयर, और मैं कहूँगा यार let's see if the room is empty, I'll just go ahead and use it. So on demand में ये चांस होता है, एंड डिमांड में ये चांस होता है कि रूम खाली होगा, ये चांस भी होता है कि रूम नहीं खाली होगा। अगर खाली नहीं होगा तो क्या होगा, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, खाली नहीं होगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी देर में खाली हो जाए, थोड़ी देर में खाली हो जाएगा तो मैं फिर यूज कर लूंगा, दैट्स ओके। बट अगर मैंने रिजर्वेशंस करवा दी तो फिर जो है वो मुझे खाली होने का इंतजार नहीं करना। आई हैव मेड द रिजर्वेशंस, उन रिजर्वेशंस को जो है वो अबाइड बाय करना होगा। दैट मींस द रूम विल बी माइन इफ आई हैव मेड द रिजर्वेशंस। ठीक है। सो हाई लेवल के ऊपर यू इधर मेक द रिजर्वेशंस और यू
you just on the fly आप जाके जो है ना on demand जाके claim कर लेते हैं एक रिसोर्स को. इंटरनेट के केस में भी ऐसा ही होता है. इंटरनेट के केस में भी ऐसा होता है. ठीक है. However, what do you guys think कि इंटरनेट कैसे ऑपरेट कर रहा होता है? इंटरनेट जो है वो ऑन डिमांड ऑपरेट कर रहा होता है या रिजर्वेशंस के बेसिस पे ऑपरेट कर रहा होता है? रिजर्वेशंस और ऑन डिमांड. आंसर्स इन द चैट विंडो. आंसर्स इन द चैट विंडो. व्हाट डू यू थिंक? इंटरनेट ऑन डिमांड है या रिजर्वेशन बेस्ड है? बिलाल कह रहे हैं बोथ. साद एंड राजी कहते हैं ऑन डिमांड. ऑन डिमांड, both reservation based. But the way that internet works is on demand. Precursor of the internet जो हमारा public switched telephone network होता था, जिस पे पुराने जमाने के टेलीफोन चलते थे, लैंडलाइन टेलीफोन जो चलते थे, that was reservation based. और reservation का क्या मतलब है? reservation का ये मतलब है कि एक पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, पूरा का पूरा फिजिकल पाथ रिजर्व हो गया. ठीक है. मैंने फोन पे कॉल मिलाई है, अब मुझे बिल आना शुरू हो गया है क्योंकि रिजर्वेशन मैंने की हुई थी. आई विल गेट द बिल इवन इफ आई डोंट स्पीक. अगर दोनों एंड्स के ऊपर खामोशी हो जाए, मुझे नहीं पता ऐसा कब होता है, बट यू गाइस माइट नो कि दोनों एंड्स के ऊपर अगर खामोशी हो जाए तो फिर भी बिल आता रहेगा आपको. If you have made the reservations, if you are using it on demand, then उसके बाद जितना आप यूज करेंगे उतना आपको बिल आ जाएगा. Pay as you go टाइप का बिल आएगा. ठीक है. So reservations और on demand में ये फर्क है. इंटरनेट जब भी हमने यूज करना होता है, when I use the internet, मैं let's say वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ, I type www.cnn.com, I make a request, my browser makes a request on my behalf and gets the file, displays it. अब CNN का कोई आर्टिकल है वहां पे, मैं वो पढ़ूंगा, कितनी देर में वो आया होगा? मे बी इट वुड टेक less than 1 second to load that article. ठीक है. उस आर्टिकल को पढ़ते हुए मुझे 5 मिनट लग गए. अब उस 5 मिनट के लिए I don't want to pay the money for those 5 minutes, and in fact I don't want to use the network for those 5 minutes, क्योंकि मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं भाई नेटवर्क. वो नेटवर्क मैं चाहता हूं कि कोई और यूज कर ले. उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि इस तरह से जब हम शेयरिंग करेंगे तो कॉस्ट मेरे लिए बहुत नीचे चली जाएगी. That's why the phone calls these days on WhatsApp, they are almost free. But actually WhatsApp पे free है, but indirectly आप पे कर रहे हैं अपनी नेटवर्क सर्विस का. But that's extremely cheap. Previously if you used to call, even पाकिस्तान में भी आपको लाहौर से कराची कॉल करनी है तो 50 रुपए पर मिनट होते थे. And I'm talking about 30 years ago. And 50 रुपए पर मिनट 30 years ago was आज के दौर के वो शायद 500 रुपए पर मिनट होंगे. But now you can talk to somebody in Karachi for free. WhatsApp के ऊपर कॉल कर रहे हैं और फ्री में हो जाएगा. And that is only possible because of this on demand thing. ठीक है. What we have not talked about yet is ये वाली जो लाइन मैंने लिखी हुई है, with or without multiplexing. With or without multiplexing. Yeah. With or without multiplexing का क्या मतलब? Multiplexing is also sort of sharing, but it's not really the kind of sharing that we expect from on demand. ये हम next lecture के अंदर इसकी clarity लेकर आएंगे, but we will talk about how these reservations are implemented. Okay. So the two approaches to sharing reservations, either with or without multiplexing. If you make the reservations as in the plain old telephone system, plain old telco system, okay, that was reservation based, and it is called circuit switching. Okay. Switches उसमें भी लगे होते थे, but not the kind of switches that you see here. Those were different kind of switches. काम उनका भी वही होता था कि आपके पास डेटा एक तरफ से आया और दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर दिया, ऑडियो इधर से आई और ऑडियो दूसरी तरफ फॉरवर्ड चली कर दी, लेकिन वहां पे fully reserve होता था. On demand is the paradigm which is used on the internet. It uses what we call packet switching. It's called packet switching. Now packet switching has two things inside it. One is
कि इफ आई वांट टू सेंड अ लार्ज चंक ऑफ डेटा, मैं वो एक बारी में नहीं भेजूंगा, ये हमने लास्ट टाइम एस्टैब्लिश किया। आई विल break it down into smaller chunks that we call packets. तो पैकेट फॉर्म करेंगे, पैकेट फॉर्मेशन is essential for पैकेट स्विचिंग। लेकिन पैकेट फॉर्म करने का ये मतलब नहीं है कि मैंने ऑन डिमांड कर दिया। पैकेट फॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ऑन डिमांड कर दिया। ऑन डिमांड मैंने तब किया है जब मैं कहूं कि यार एक पैकेट है, इसको भेज दें, अगर जगह खाली हुई तो चला जाएगा, नहीं हुई तो वेट कर लेगा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा पैकेट भेज दें, जगह हुई तो चला जाएगा, नहीं हुई तो वेट कर लेगा। सो आई वुड लाइक टू डू व्हाट वी कॉल स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाट दैट मींस इज कि जगह है तो भेज दें, नहीं है तो इंतजार कर लें, थोड़ी देर बाद भेज दें, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स, फॉर्मेशन ऑफ पैकेट enables you to do statistical multiplexing. Think about it कि अगर मैंने पैकेट ना बनाए होते, एक ही बड़ी सारी फाइल होती, मैं कहता कि यार एक ही बारी में भेजनी है। So that is almost saying कि इतनी देर के लिए जो है, इतनी देर में ये फाइल जाएगी, इतनी देर के लिए मेरे लिए रिजर्व ही कर दो। लेकिन यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यार ये मेरे पास जो है, मैंने मिलियन पैकेट्स बना दिए, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल थी, उसके मैंने स्मॉलर पैकेट्स बना दिए, मिलियन पैकेट्स बना दिए, एक एक करके भेज दो, जहां जगह मिले वहां पे भेज दो। That packet formation has enabled you to do what we call statistical multiplexing. Okay. So packet switching mein packets are treated on demand. And admission control, when I say admission control means कि आपका पैकेट का डेटा नेटवर्क के अंदर एडमिट हो गया, नेटवर्क ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसको भेज दूंगा डेस्टिनेशन पे, एंड दैट एडमिशन कंट्रोल इज पर पैकेट बेसिस। ईच पैकेट इज कंसीडर्ड इंडिविजुअली। हर पैकेट जो है इंडिविजुअली कंसीडर होता है। पहला पैकेट हो सकता है एडमिट हो जाए और नेटवर्क उसको भेजने के लिए तैयार हो जाए, भेज रहा हो, दूसरा पैकेट अभी एडमिट ना हो सके, भाई प्लीज आप वेट करते हैं, ठीक है। सर्किट स्विचिंग, द एडमिशन कंट्रोल इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग इज पर कनेक्शन बेसिस। इसका मतलब है कि मैंने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। फोन जब डायल करते थे ओल्ड टाइम्स के अंदर, अभी भी लैंडलाइन फोन से करेंगे तो you have to have connection established all the way from source to the destination। पूरे के पूरे कनेक्शन के लिए मेरी पूरी जितनी कॉन्वर्सेशन हो रही है उस कम्युनिकेशन होगी, उस कनेक्शन के ऊपर होगी। सो एडमिशन कंट्रोल, द एडमिशन इनटू द नेटवर्क, इनटू द टेलीफोन नेटवर्क would be based on per connection basis, not per packet basis, क्योंकि पैकेट ही नहीं है यहाँ पे। For the entire duration of the communication, you will reserve the path all the way from source to destination. There is a hybrid for these as well, and we will talk about that in the later part of the course. ये अभी इसके ऊपर there is some discussion of that in the text, but it might confuse you right now. अगर हम अभी उसके बारे में बात करें, we will need to wait for this virtual circuits until we see the virtual circuits later on in the course. Okay? So circuit switching के केस में the source will send a reservation request to the destination. Source यहाँ से एक reservation request भेजेगा destination की तरफ, वो कहेगा I want to send data to you at 10 megabit per second. So रास्ते में जितने switches हैं उनसे पूछता हुआ जाएगा 10 megabit per second बर्दाश्त कर लेंगे? If the answer is yes, next से पूछेगा Can you sustain 10 megabit per second? अगर वो yes कहता है फिर अगले से भी पूछेगा Can you sustain 10 megabit per second? So this connection is being discovered. A connection is being discovered. रास्ता में सबसे पूछते जा रहे हैं कि भाई 10 megabit per second, can you sustain that? Can you sustain that? And if the destination says that yes, I can sustain that, ये कहेगा ठीक है, I establish a circuit. ये circuit establish हो गया। अगर सबने confirmation दे दी तो circuit establish हो गया। ये circuit establish करने के लिए भी behind the scene कोई protocol चला है, ठीक है? But this circuit is established. What that means is कि now for the entire duration of the conversation, जब तक ये source और destination hang up नहीं कर देते, जब तक ये hang up नहीं करते थे, ये पूरा का पूरा रास्ता इनके लिए रिजर्व हो गया, कोई और यूज नहीं कर सकता। If this blue guy wants to communicate with this blue guy, उसके लिए कोई पाथ ही नहीं बचा, Why? Because मैंने ये पूरा का पूरा सर्किट इनके लिए पूरा का पूरा पाथ रिजर्व कर दिया है। ये पूरा पाथ रिजर्व कर दिया है। The source will start sending the data. When it is done, it will tear down the circuit. सर्किट को टीयर डाउन कर देगा। क्यों टीयर डाउन करना जरूरी है? इसलिए कि जब तक टीयर डाउन नहीं करेंगे बिल आता रहेगा।
टीयर डाउन करेंगे तो फिर कोई और उसको यूज कर सकता है। वंस इट इज टीयर डाउन फिर कोई और उसको इस्तेमाल कर सकेगा, ठीक है। सो इफ यू लुक एट अ स्विच, ये बड़ी सिंपल 2x2 का स्विच है, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक आपने जाना है। सो a path is reserved within the switch. Reservation is established within the switch. A circuit is established within the switch. और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता. This blue guy here and this blue guy, they will not be able to communicate with each other as long as this path is here. क्योंकि मैं और path नहीं कर सकता, ठीक है? So we can also do multiplexing in circuits. Oh, we are already over time. So multiplexing जो है वो हम next lecture के अंदर discuss करेंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. Any question before I hang up? एक क्वेश्चन था जो आपने like उसमें बताया था सेकंड वाला. आप प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत मफल्ड आ रही है. एक सेकंड सर, मैं बेसिकली कह रहा हूँ आपने जो मल्टीप्लेक्सिंग और पैकेट स्विचिंग का मुझे बताया था, तो मुझे दो उसकी टाइप्स थी कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, लाइक जो मल्टीप्लेक्सिंग वाला पार्ट था. मल्टीप्लेक्सिंग वाला जो पार्ट था सर पिछली स्लाइड आई थी ये रिजर्वेशंस विद और विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग. रिजर्वेशन जो है आप विद और विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं. जो मैंने मल्टीप्लेक्सिंग जो बताई थी आपको कि जिस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि चैनल्स, टीवी के चैनल्स जो है केबल के ऊपर 6-6 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ ले लेते हैं, दैट मल्टीप्लेक्सिंग डज नॉट मीन कि हम ऑन डिमांड की बात कर रहे हैं. ये नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसको क्लियर करेंगे एग्जांपल के साथ. लेकिन अंडरस्टैंड दैट कि मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऑन डिमांड पे चले गए. मल्टीप्लेक्सिंग का सिर्फ ये मतलब है कि एक रिसोर्स है जिसको मैंने रिजर्व कर लिया है. जिस तरह आपकी केबल के ऊपर जियो वालों ने वो 6 मेगाहर्ट्ज रिजर्व कर लिए हैं, ARY ने अनदर 6 मेगाहर्ट्ज रिजर्व कर लिए हैं, ESPN स्पोर्ट्स ने एक और 6 मेगाहर्ट्ज, डिफरेंट 6 मेगाहर्ट्ज फुल्ली रिजर्व कर लिए हैं. अब वो उसी के हैं, अब वो कोई और नहीं वो इस्तेमाल कर सकता, ठीक है. सो दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग बट यू हैव ऑलरेडी मेड द रिजर्वेशंस. दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग बट यू हैव मेड द रिजर्वेशंस. बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे एक रूम के अंदर 2 कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, 4 लोग हैं और 2 कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. पहले एक बंदा कॉन्वर्सेट कर ले, फिर दूसरा कर ले. पहले एक कॉन्वर्सेशन, फिर दूसरी कॉन्वर्सेशन, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, साइमल्टेनियसली नहीं हो रही होंगी. सो in this case it is reservations with multiplexing, but we will have an example of that in the next class. ये slides तो हम अपलोड आज ही कर देंगे, तो आप इनसे देख भी लीजिएगा. सर मेरा सवाल था बेसिकली ऑन डिमांड के अंदर दो चीजें थी ना, एक पैकेट फॉर्मेशन और एक स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग. तो मेरा पूछने का सवाल था ये उसके अंदर टाइप्स आ रही हैं कि वो लाइक पैकेट जो स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग वो डिपेंड कर रहा है पैकेट फॉर्मेशन पे. हाँ, नहीं, स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग आप नहीं कर सकते जब तक आप पैकेट फॉर्मेशन ना करें, ठीक है. सो ऑन डिमांड अगर आप करें जो पैकेट स्विचिंग के अंदर होती है, so you will have to make the packets as well as do the statistical multiplexing. It is possible to make the packets and not do statistical multiplexing, in which case it will not be, I will not call it a pure packet switching. जो packet switching हम word use करते हैं उसके अंदर packet formation and statistical multiplexing implicit होती है, ठीक है. It is possible कि I do a reservation और reservation करने के बाद मैं packets ही भेजूं सिर्फ. It is possible कि I can make packets but only send those packets over a reserved path from the source to the destination, ठीक है. ऑन डिमांड लेने के लिए पैकेट बनाना मेरे लिए जरूरी हो जाता है. बगैर पैकेट बनाए मैं ऑन डिमांड कर ही नहीं सकूंगा. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पैकेट बना के ऑन डिमांड करना जरूरी है. पैकेट बना के रिजर्वेशंस भी कर सकते हैं. Does that answer your question? Yes. ठीक है. Anyone else? Sir, I have a question. Yeah, I have a question. Can you hear me? All right. In the circuit switching, you said that, for example, we are sending a request for 10 MB per second, and let's just say, okay, if one circuit switch says that it can't do that, it can't allocate that much, would the circuit switch would not establish the path, or is there a workaround about that? Would not establish the path. अगर वो इतने रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल तो आपका सर्किट ही नहीं एस्टेब्लिश होगा.
And all right, and after the establishment, and let's say कि source और destination ही उस path को terminate करेंगे कि can the network itself terminate it after some time? many different protocols उसके लिए होते हैं circuit establish करने के लिए. Without going into the details, ये source के end के ऊपर भी हो सकता है या दरमियान में जिस जगह पे एक सर्किट के दरमियान में एक स्विच ने कहा कि मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है, तो वहां से भी एक डिनायल रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्च हो सकता है और फिर उसको देख के सोर्स कहेगा ठीक है सर्किट नहीं एस्टेब्लिश हुआ, कोई मसला नहीं, हम फिर बाद में कभी ट्राई कर लेंगे. सर स्विचिंग का मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है. No, स्विचिंग का mention is that मतलब after सर्किट स्विचिंग का establishment मतलब of the connection. you Let's establish say the कि source and circuit. destination ने communication कर लिया लेकिन हमने terminate किया तो after some time the network itself terminated. I'm sorry, आप रिपीट करेंगे जरा. Sir, I think my internet is not working properly. Can you hear me? जी जी, बीच में आपकी आवाज बीच में थोड़ी ना मफल हो जाती है. आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन का इशू Yes, नहीं sir, my है, internet is not working. माइक्रोफोन का कुछ था इशू. Okay, sir. My question was that let's say कि source and destination के दरमियान establishment हो गई है link की, so उन दोनों ने communication कर लिया लेकिन उन दोनों ने terminate नहीं किया, क्या network उसको terminate कर सकता है after some time? अगेन डिपेंड करेगा ये किस तरह का हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ टाइम के बाद हो सकता है नेटवर्क के अंदर एक डिफॉल्ट बिहेवियर इस तरह का हो कि 1 घंटे के बाद जो इसको टर्मिनेट कर दें, ऐसा हो सकता है. अगेन दिस इज ए वेरी नेटवर्क स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हिच विल डिपेंड अपॉन कि क्या आपने पॉलिसी रखी हुई वहां पे. ठीक है शहजाद, आपका क्वेश्चन. मैंने ये पूछना था कि सर जो बैंडविड्थ की हमने जो पहले बात की मतलब कि फ्रीक्वेंसी की, तो इन दोनों कैटेगरीज में वो कहाँ पे आती है? ऑन डिमांड में आएगी? इन दोनों कैटेगरीज में क्या आती है? हमने दो मतलब की बात की थी ना कि एक मतलब हमने बात की थी टाइम शेयरिंग के थ्रू और दूसरा बात की थी हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी. दो बातें की थी ना शुरू में. तो मैंने ये पूछना था वो फ्रीक्वेंसी वाली है वो इन दोनों कैटेगरीज में कहाँ आती है, रिजर्वेशंस में या फिर ऑन डिमांड में? जी वो मैंने जैसे आपको बताया था कि रिजर्वेशंस जो है वो विद और विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग दोनों हो सकती हैं. तो जो मल्टीप्लेक्सिंग हमने की थी ना वो भी रिजर्वेशन के साथ ही थी, वो भी रिजर्वेशन के साथ थी. ऑन डिमांड करने के लिए मुझे पैकेट्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद पैकेट्स की स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी, नॉट द सिंपल मल्टीप्लेक्सिंग. एंड वी डू हैव एन एग्जांपल लेटर ऑन स्लाइड्स में जो हम आज कवर नहीं कर सके हैं, वो हम डेफिनेटली कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना. आई विल अपलोड द स्लाइड्स. आप अगली स्लाइड्स यू कैन रीड अहेड, सिर्फ 3-4 स्लाइड्स आ गई है, आप उसको रीड अहेड कर सकते हैं और बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर भी देख सकते हैं. ठीक है. एनीवन एल्स, किसी और का क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन था एक लॉजिक वाइज, उससे जी, ये बिलाल. कि अगर जैसे आप भी लम्स में बैठे हैं, अगर मैं भी लम्स में बैठ के हम वही नेटवर्क यूज कर रहे हैं और वी आर जी. कनेक्टिंग टू जूम सर्वर फॉर आवर वीडियो कॉल, तो इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि हम बजाय के जूम के सर्वर को करने के हम लम्स के स्विचेस यूज करके ही आपस में कनेक्शन कर लें, वीडियो कॉल इस तरह कॉल वगैरह होती है? हाँ, तो फिर बाहर वाले लोग कैसे कनेक्ट होंगे? यानी कि वो वाले जो हैं वो फिर एक सिंगल चैनल के थ्रू बाहर से कनेक्ट हो जाए, यानी कि लम्स के से एक ही कनेक्शन जा रहा हो. एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं. जूम ऐसे डिजाइन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ये जूम के डिजाइनर्स को पता होगा. प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, उन्होंने किसी को नहीं बताया. स्काइप इससे पहले बहुत ज्यादा फेमस था, एवरीवन वुड यूज स्काइप. स्काइप का जो इंटरनल्स थे nobody would know about those as well. Skype ने भी जो अपना प्रोटोकॉल जो है वो प्रोप्राइटरी रखा था. They did not publish it, they did not disclose it to anyone. लोगों ने गेस किया हुआ था कि Skype ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, गेस वर्क्स थे, लेकिन nobody knew internally वो कैसे काम कर रहा है. और आई एम श्योर कि उन्होंने चीजें ऑप्टिमाइज की होंगी. कुछ चीजें Skype की जो है वो लोगों ने बड़ी जो है वो रिसर्च करके डिस्कवर कर ली थी, लेकिन इंटरनल्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स वर नॉट clear to anyone. सर इज देयर सम वे कि हम यानी कि अपना ही सर्वर यूज करके तो लोकली अगर लम्स वालों ने सर्वर कॉल करनी हो लेट्स से, तो वो जूम को ही अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके तो लोकली सारे बातचीत कर लें, ऐसे हो सकता है? शायद जूम इजाजत देता हो, इसकी शायद नहीं देता, मेरा नहीं ख्याल के देता है. ठीक है, थैंक यू जी जी. ऑलराइट, किसी और का क्वेश्चन हो?
Okay, I think that's it. We will see you next Tuesday. Tuesday को मुलाकात होती है फिर. All right, we will upload the video of this this lecture as soon as it is available. जब भी available होती है तो मैं upload कर दूँगा.